Now, representing the government of Haryana is the officer on special duty to the Chief Minister, Jawahar Yadav. I hope, Mr. Yadav, that on the program tonight you will present the resignation of the Home Secretary of Haryana for this incident. I hope you brought it with you. In case you haven't, you'll have to explain why. Captain I.P. Dhanwar is son of Paramjit Kaur. He is the victim of VVIP culture. On the screen right now, we'll put pictures of his mother and a few details about her before we start the debate. Ashish Shelar is joining us. He's president of the Mumbai BJP tonight on an incident in Mumbai. Madhuresh Kumar, national convener of the National Alliance of People's Movements. Ajay Kumar of the Congress Party with us on the panel right now. Now, I'd like to start with you, Jawahar Yadav. The Home Secretary of Haryana knocks down a 90-year-old lady, that also someone who has served in the army in the past. You're aware of this incident. Now tell me, if a 90-year-old woman is to be knocked down by the Home Secretary of the state and she's left there like that and he doesn't help her at all and he leaves her absolutely defenseless, what is the responsibility of your government? अर्नव जी, मेरा निवेदन है एक तो मुझसे हिंदी में वार्तालाप करें जिससे मैं ठीक से जवाब दे पाऊं। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर उनका इस्तीफा उनके तौर पे आप दिखाना चाहते हैं प्रोग्राम पर तो वी विल अप्रिशिएट इट, क्योंकि हमें नहीं लगता ऐसे कोई होम सेक्रेटरी को होम सेक्रेटरी बने रहना चाहिए। नंबर एक, अर्नव जी, आपके कहने से किसी का इस्तीफा होगा, एक तो ये थोड़ा आपको इतना नहीं मान के चलना चाहिए कि आपके कहने से किसी का इस्तीफा हो जाएगा। इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, संशोधन और करूंगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, मेरी बात पूरी कर, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, बात पूरी कर लीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप कर लीजिए। डोंट शाउट, डोंट शाउट, अरे बोलने की आजादी मेरी भी है, बोलने की आजादी मेरी भी है, बोलने की आजादी है। चिल्लाइए मत, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है लोग देख रहे हैं, मुझे मालूम है लोग देख रहे हैं। टोन डाउन प्लीज, टोन डाउन। उनके बेटे इधर बैठे हुए, जरा थोड़ा तो तमीज दिखाइए, थोड़ी सी तमीज दिखाइए, थोड़ी सी तमीज दिखाइए। टोन डाउन। उनके बेटे बैठे हुए हैं, आप उनके बेटे बैठे हुए हैं। आप सुन लीजिए प्लीज, शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए। आप सुन लीजिए, आप शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए। आपके मुख्यमंत्री का ऑफिस नहीं है ये, शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए। आपके मुख्यमंत्री का ऑफिस नहीं है। काम डाउन। मेरा रिक्वेस्ट है, आप शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए। आप पहले सभ्यता दिखाइए। आप शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए। प्लीज बिहेव योरसेल्फ, काम डाउन। इस्तेमाल ठीक कीजिए, मेरा निवेदन है। मैं पहले अपनी बात कर लेता हूं। आपने फोटो देखे हैं क्या किया आपके होम सेक्रेटरी ने? आपने फोटो देखे हैं? मैं आपको एक इंसिडेंट का रिपोर्ट देता हूं, सुनिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, आप नेताओं के साथ बैठे बैठे आपको भी स्पीच देने की आदत हो गई है। आप सुन तो लीजिए बात, मुझे भी सुन लीजिए ना। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, आप मुझे भी सुन लीजिए। आप पहले इंसिडेंट रिपोर्ट देता हूं मैं व्यूअर्स को। आपकी नहीं है ना, सब कुछ सिखाने की जिम्मेवारी। This is the problem with you. This is the problem with you, Jawahar Yadav. This is the problem with bureaucrats in this country. Let's just lower his volume and I want to tell the viewers something. Viewers, here is the officer on special duty to the Chief Minister of Haryana. I have given him a full opportunity to present his side of the story. I am asking him tonight whether on behalf of his government he would like to apologize for incident. Now let me repeat the incident once again. On the 25th of September, 90-year-old Captain Paramjit Kaur Dhanwar, retired, former army doctor who has served India during the 1962 Sino-Indian War, and I'll put on air right now the pictures of her as a captain in the army. She breaks her rib besides suffering an injury on her head and injuries on her face after being mowed down by a car ferreting the self-important Home Secretary of Haryana called Anil Kumar. Did this incident happen or not happen? Now on the other side is Captain Dhanwar's son. Did this incident happen or not happen, and what would you want? I mean, you've seen the tone of the bureaucrat on top of the program tonight, Captain Dhanwar. What would you say to him? What is your expectation? This happened, and this bureaucrat showed no remorse. He was arrogant. He's insensitive, irresponsible, and I want that he's reprimanded, severely reprimanded. I mean, the worst kind of punishment should be given to him. Right. Okay. Till date, he has not apologized. Yeah. And also at the time of accident, when I asked him his name, he was so arrogant that he did not even give me his name. Really?
He didn't give his name, so he's a coward. Yeah. Not only is he someone who has carried out a crime, he is a coward. कायर है वो कि 90 साल की औरत को वहाँ पे रास्ते में उनकी गाड़ी से मारे, धक्का मारे, वो गिर जाए, उनकी इस तरह से हाल हो कि उनको मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाए, और उन्होंने अपना नाम तक नहीं दिया। मुझे बताइए जवाहर यादव जी, डिड द होम सेक्रेटरी एंड हिज वाइफ arrange for medical help given that the injuries were serious enough for the 90-year-old lady to break her rib bones and suffer a head injury? अर्नव जी, अब मेरा निवेदन है, आप मुझे सुनेंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। Just tone down your voice. Don't, okay, I'll listen to you. I'll also tell you one thing before you start. Jawahar Yadav, 1 second. I'll listen to you. But I want to tell you one thing. You see, Mr. Yadav, I have had enough. And I am fed up with arrogant people who are sitting in situations of power. When an incident like this happens, all I want you to speak is speak with a sense of humility and courtesy to others. Don't speak from a pedestal. आप समय बदल चुका है, ये जरा समझ ले, अभी बोलिए। अब मेरा निवेदन ये है, आप मुझे सुनेंगे और सारी चीजें मेरे बारे में आप तय नहीं करेंगे। ये कहीं किसी को नहीं है कि 90 इयर्स ओल्ड की किसी महिला को चोट लगी हो, उस पर किसी को दुख नहीं हो। 100% उस पर दुख है। महिला क्या, किसी को भी चोट लगती है उसका दुख होना चाहिए, ये नैतिकता कहती है। इसमें किसी से कोई सहमत नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक संशोधन करूंगा, अनिल कुमार जी नाम का कोई भी व्यक्ति हरियाणा में होम सेक्रेटरी नहीं है। हरियाणा के होम सेक्रेटरी का नाम मिस्टर पीके महापात्रा है। एक तो हरियाणा में कोई होम सेक्रेटरी है तो वो मिस्टर पीके महापात्रा है। अनिल कुमार नाम का कोई व्यक्ति होम सेक्रेटरी नहीं है। दूसरा, मेरा कहना यह है कि बुजुर्ग महिला को चोट लगी, उसका दुख होना चाहिए, सबको होना चाहिए। So who is the person? No, 1 second. Okay, 1 second, 1 minute. Maybe you got the designation wrong. 1 minute, please. Maybe Captain Dhanwa got the designation. Is there somebody called Anil Kumar? Yes, the Anil Kumar was earlier UT Home Secretary. Now I heard he's into industrial training. I mean, I didn't know him. Okay. This is what the information I got. So he's trying to take advantage. You see, the officer on special duty is trying to take advantage of that technicality. So uspe zara it doesn't matter which exact position he is in. He is a very senior bureaucrat. Is he referring to a senior bureaucrat by that name? Is he, or does he not? Now let's specific, Jawahar Yadav. Get specific. Specifically बताएं. Go ahead. दूसरा मेरा कहना ये है कि go ahead. जो बुजुर्ग महिला को चोट लगी, no, बुजुर्ग महिला को, no, 1 second. There is a complaint against an IAS officer on Saturday. Is this true or not true? A. Secondly, is there a former Home Secretary called Anil Kumar who the complaint is against in this particular case? Yes or no? Yes or no? Yes or no, Mr. Jawahar Yadav, बोलिए। हरियाणा सरकार के पास, आप सुनिए ना जी, अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। हरियाणा सरकार के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। हरियाणा सरकार के क्षेत्र में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी। और ये जो घटना घटी है, ये केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में घटी है। इसमें हरियाणा सरकार में कहीं ये घटना नहीं घटी। हरियाणा सरकार के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। उसके अलावा ये चंडीगढ़ में भी घटना घटी है। के खिलाफ एक्शन लिया गया। अजय कुमार एंड मधुरेश, you see, look at the mentality of the OST to the Chief Minister, that he is now trying to pass the buck through a technicality. It happened in the UT area, didn't happen in Haryana. He doesn't care tonight. The OSD to the Chief Minister doesn't care tonight that a 90-year-old woman has been mouthed down and hurt in this manner by a bureaucrat's car, far away from any remorse. 1 minute. Please. I think the person here. I think the point is, once listen to me, Jawahar. Listen, Mr. Jawahar Yadav. I don't care whether he's a former Home Secretary or a present Home Secretary or he's an industry secretary. Please listen to others, please. Okay, the viewers will take the call. A 90-year-old lady, by the way, ladies and gentlemen. Let me introduce this lady. Retired Captain Paramjit Kaur Dhanwa. Her pictures on the screen, please, of the Indian Army. Has served our nation as doctor in the Armed Forces Medical Corps, providing medical support to the Armed Forces. 90-year-old retired Captain Paramjit Kaur Dhanwa served our war heroes as part of the Army Medical Corps
from 1955 to 1966, providing comprehensive health care to all service personnel. She provided medical aid to our injured soldiers during natural calamities, both at national and international levels. Now she is past the age of 90. An IAS officer hits her. She goes down, she suffers head injuries, she breaks a rib. This man does not identify himself at the time of the incident. He goes to watch a play instead. This lady is injured to the extent that she has to be taken to the military hospital. I think this person, whoever he is, should come forth and say, I flouted the All India service rules and I must be sacked forthright. Instead of getting the officer on special duty to the Chief Minister to come forth and plead like this on his behalf, completely unacceptable. Ajay Kumar, before you, I'll go to Madhuresh Kumar on this. Madhuresh Kumar, is this the response we expect? Is this the response we expect, Madhuresh Kumar? Arnab, the Times Now has been taking this campaign for long now, and I think this has to end, because our the political class, the political elite, they all think they are above the law. They enjoy best of the services, they have reservation, they occupy the best of the places in the country. You look at Delhi where they are living and everything, and they think they have right as the first citizens, whereas they are public servants. They forget that they are the public servants. They need to serve people. They have to recognize that we are the ones who are paying taxes, who vote them into the office. They are here to serve us. And this has to change. This cannot go on. Mrs. Dhanwaa is a war veteran, but even anybody, they don't care for. This whole culture of VVIP, we remember the Karnataka MLA debate, where they wanted to gain access into the clubs, the privileged clubs. They are all looking for the best things, but they are not caring for the Janta. And this is what Mr. Yadav is now saying, कि अभी हमको हरियाणा सरकार ने नहीं किया, चंडीगढ़ में हुआ. सरकार ऐसे ही करती है तो न्याय कब मिलेगा? आप बताइए हमको, न्याय कब मिलेगा, किस दिन मिलेगा? क्या आम जनता इस तरह से पिटती रहेगी आपकी पुलिस के हाथों? आप आगे आएंगे और लोगों को कहेंगे कि पुलिस अभी मारेगी उनको? वो लड़की नंदिनी का क्या दोष है? आपके लिए वीवीआईपी गेट है. आप कितने लोग हैं? 5 लोगों के लिए वीवीआईपी गेट, 1000 लोगों के लिए एक छोटा सा गेट. मुर्गी के दड़बे है क्या? आप बताइए. प्लीज टेल अस, प्लीज एक्सप्लेन टू अस, व्हाट इज दिस मेंटालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट? इन दिस कंट्री वी आर नॉट ए माई बाप सरकार टुडे. We are not a Mai Baap Sarkar anymore. You are public servants and you have to recognize what you are here for. This is what I have to say. And this is the anger everybody has today. Yes. Now Mr. Jawahar Yadav, I'll give you a second opportunity. Ajay Kumar is coming in. By the way, this top bureaucrat leaves a 90-year-old woman hurt, injured in this kind of a manner. Tell us what happened at the incident. Before I come to you, Ajay Kumar, you're hearing this incident, you're hearing the defense. It appears, Captain Dhanwaa, that the government does not want to do anything in your case. He's got a smile fixed on his face today. Jawahar Yadav is smiling. For him, it's a joke. What happened to your mother is clearly and evidently a joke and a matter of technicality. आप ये डिसाइड मत कीजिए. नहीं, आप मेरे बारे में टिप्पणी मत कीजिए. मिस्टर अर्नव, आप मेरे बारे में टिप्पणी मत कीजिए. Don't point your finger. आप प्लीज मेरे बारे में टिप्पणी मत कीजिए. Don't point your finger. आपको लग रहा है मैं हंस रहा हूँ? सारी चीजें आप ही डिसाइड करेंगे क्या? मैं बोलता हूँ, आप मुझे बोलने नहीं देते. मैं आपकी जियाजुरी नहीं करूंगा. मेरे व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी कर रहे हैं. मैं कुछ नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूं that you are smiling, which is disgraceful. मैं कह रहा हूं आप हंस रहे हैं ना, ये सब इंसिडेंट हो रहा है जब आप मुस्कुरा रहे हैं. Wipe that smile off your face. आप एंकर हैं. आप एंकर हैं. Now those who are in positions of power, they have no regard for Aam Aadmi's life. Anyway, they have no regard for Aam Aadmi's life. Jawahar Yadav, calm down. I'm talking to you still with respect. Yeah, come on. Okay, now Captain Dhanwaa wants to say something to you. Captain Dhanwaa. Captain Dhanwaa, calm down. Anil Kumar is a disgrace to humanity. This Anil Kumar is a disgrace to humanity. He's a disgrace to our government. He's a disgrace to our nation. And how can this guy support him? He says this incident, he doesn't know about any such incident. He says, I don't even know about any such incident. It's been coming in the newspapers for 3 days. It's been in the newspapers for 3 to 4 days now. He says Haryana government has nothing to do with it. He says the Haryana government has nothing to do. It happened in a union territory zone. My government has nothing to do with it. I will not apologize. Haryana government से संबंधित विषय नहीं है. Look, he is holding a Haryana proposition. हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित कोई विषय नहीं है. He's an IAS Haryana चंडीगढ़ की घटना घटी, ड्राइवर के खिलाफ FIR हो गई है. Industrial training. Is he a Haryana government bureaucrat? Jawahar Yadav, is this man a Haryana government bureaucrat? Is he or is he not? You tell me. Is he a Haryana government bureaucrat?
हरियाणा ऑफिसर्स ने कोई क्राइम नहीं किया। इज ये हरियाणा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट? इज ये हरियाणा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट? गाड़ी को चला नहीं रहे थे। इज ये हरियाणा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट? प्लीज अंडरस्टैंड। गाड़ी को चला नहीं रहे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। नहीं, आपने तो अभी बोला हाउ कैन यू चेंज योर लाइन? आपने अभी बोला मुझे कोई इंसिडेंट के बारे में पता ही नहीं, आप अभी बोल रहे हैं ड्राइवर चला रहा है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी आपने बोला मुझे कुछ पता ही नहीं है, ये हमारा केस ही नहीं, अभी आप बोल रहे हैं ड्राइवर चला रहे हैं। आप अपना पोजीशन तो डिसाइड कर ले पहले। कब का मुझे नहीं पता। आप विषय को मिस्टर अर्नव, आप सकारात्मक डिबेट नहीं करना चाहते। आप मुझे बताएं आपको क्या पता है केस के बारे में। मन बना लिया। आप मुझे सिखाइए मत, आप मुझे बताएं कि आपको इस केस के बारे में क्या पता है। मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है कि 90 साल की उम्र से ज्यादा एक महिला को एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के गाड़ी ने धकेल दिया, वो गिर गई, उनको बहुत बड़ी इंजरी हुई और वो जाके थिएटर में बैठे हुए थे। उसके बाद क्या उनकी नैतिकता नहीं है कि वो उनको हेल्प करें? उनके बेटे बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम पर, कुछ कहना चाहते हैं आपसे? कैप्टन धनोआ, गो अहेड। आई एम कमिंग टू अजय कुमार। दिस इज डिसग्रेसफुल। यस प्लीज। आप सुन लीजिए। अनिल कुमार इज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट फ्रॉम हरियाणा कार्डर। सुन लीजिएगा आप। गो अहेड कैप्टन धनोआ, गो अहेड। जब तक आप सुनेंगे, गो अहेड कैप्टन धनोआ। उस पे आरोप लगाएंगे, सुनेंगे। And he did not stay back to give any medical assistance. Everything was a phone call away from him. He was the home secretary of UT. It was only a phone call away for him to arrange for an ambulance, to arrange for treatment. But this man chose not to, and he went away to watch the play. Yeah, my simple question is, my first major question tonight is this. This government says, one sec, I come to you on it. This government says, and this is one of the two key questions tonight on the debate. This government says, in fact, the Prime Minister himself said, रमेश जवाहर यादव जी, आप थोड़ा सोच लीजिए, सोच समझ के बोलिए। आपके सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, the Prime Minister himself said, it is the nation's responsibility. He has said it is the nation's responsibility to look after senior citizens. My question is, what responsibility did the Home Secretary take? Allow me to complete this question. It will be on the screen as well. What responsibility did the Home Secretary or former Home Secretary, whatever he is, it doesn't matter. What responsibility did this bureaucrat take to ensure that a 90+ war veteran was looked after immediately? Tell me. What responsibility did he take? What responsibility did he take? Yes, tell me now. सुनिएगा ना, आपने मुझे क्वेश्चन किया, उसका उत्तर तो मैं ही दूंगा, उसका आंसर What responsibility did he take? Yeah, tell me what he did. आप करेंगे और आंसर नहीं देंगे। अरे relax, so don't pass personal comments. Answer the question. अब इसका आंसर सुन लीजिएगा। Yeah. हाँ, आप अब इसको सुन लीजिएगा मेरा। इनका दुर्घटना घटी, बुजुर्ग महिला को गाड़ी का शीशा लगा, महिला गिर गई। उसके बाद अनिल कुमार ने और उसकी पत्नी ने मिलकर उन बुजुर्ग महिला को उठाया। उसके बाद उनको चेयर मंगाई, चेयर पे बैठाया। उसके बाद उनसे पानी पूछा, जो महिला ने, बुजुर्ग महिला ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने एम्बुलेंस के लिए अब आप सुन लीजिए मुझे। अब आप सुन लीजिए, आप थे वहां पे, उनके बेटे के बारे में सुनिए। We'll take this question off the screen. 1 second please. Just 1 minute please. 1 minute. नहीं, on the other side, ये कोई speech नहीं है। ये this is not a political speech. The son is contradicting you. वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। Go ahead, Captain धनोआ। आप भी डिसाइड नहीं करेंगे। Go ahead. ये डिसाइड आप नहीं करेंगे। Relax. Calm down, जवाहर। ये आप भी डिसाइड नहीं करेंगे कि जो आपको viewers will decide. Not even apologize. केवल आपको अच्छा लगे, केवल आपको अच्छा लगे, ये मैं नहीं बोलूंगा। मिस्टर अर्नव, कैप्टन धनोआ, go ahead. Jawahar will not stop. इसमें आपके Captain धनोआ, I said a man who cannot give his name, who cannot apologize, what help can he give? Man, we needed an ambulance to come. We needed some medical treatment. I mean, it was just a phone call away from him. Why didn't he do that? It is a Supreme Court ruling that if you knock down somebody, you have to provide medical treatment. Take the person to the hospital. Why couldn't he take her in his own car? She had a big ball on her head, a big on top of her left eye. There was a big bulge like a ping pong ball. And this guy is saying his wife was sent away immediately after she got off, and this guy followed soon. And a 90-year-old woman, and you're actually playing it down. I don't know what kind of government you represent. आप कैसी सरकार है आपकी? आपको क्या लगता है लोग अभी देख रहे हैं, आपको क्या ताली देंगे?
आप देख रहे, given a senior bureaucrat claims that his car was very slow. Please explain to me how a car that is going at low speed, how is a car that is going at low speed break the ribs of a victim? Mr. Arnav, सारा समझाने का ठेका आपके पास नहीं है, केवल आप ही समझाएंगे ऐसा नहीं है, आप सुन लीजिएगा। झूठ बोलने का ठेका तो आपके पास है मुझे लगता है। Now my point is this, if listen Jawahar, you're not being able to answer anything. Jawahar, you're not being able to answer anything. You're not being able to answer anything. Now you know there is an extent to which you can fabricate. आप आंसर लेना नहीं चाहते। आप go ahead Captain Dhanwa, go ahead. He's not going to accept it. I'll open up the phone lines in a minute. Go ahead Captain Dhanwa, go ahead. Anil Kumar, in the newspaper he says that everything is on the CCTV of the camera. He has given these statements in the newspaper. And when I went to the SHO yesterday, SHO said that nothing is clear on the CCTV, that 1 hour of footage. So it is under maybe his instructions, because they would have seen the car coming, hitting my mother, that this evidence has been destroyed. Yeah, you know this. The bureaucrat will not accept it. Ajay Kumar, I want you to come into this. Ajay Kumar, you've also been in the police. You won't believe this, Arnav. Yeah, go ahead, Mr. Dhanwa, go ahead. In the presence of my sitting there, this Anil Kumar is calling up an inspector. He's calling up an inspector on his phone. I was sitting with the SHO in the Sector 19 police station. Can you imagine a senior bureaucrat calling up an SHO, the inspector there who was on duty at that time? What was he calling him for? To influence him or what? He was calling him to manage the system, presumably. Now the question is this, please. The fact is, Ajay Kumar, for far too long, you see, Ajay Kumar, I'm coming to you. For far too long, you see, bureaucrats believe that they will be able to manage the system. As they say Hindi mein, setting kar lenge. Manage कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे, बोल देंगे, फोन कर देंगे, हैंडल हो जाएगा, क्या बड़ी बात है, कोई गिर गया, फोन कर देंगे, पुलिस वालों को कर देंगे, रफा दफा कर देंगे, हैंडल कर देंगे, कोई मीडिया भी कोई बात करेगी तो मीडिया को उंगली दिखा के टेलीविजन, भारतीय नेशनल टेलीविजन पर धमकी देंगे। आदत पड़ गई है, आदत बिगड़ गई है इन सब ब्यूरोक्रेट्स की, तो लोगों को अब समझाना चाहिए। You know, the point is this, Mr. Dhanwa, as I said to you before the program today, and I'm saying this to you on live television, Mr. Dhanwa, you are speaking for all of us. I cannot imagine today if somebody's father or mother falls down like that and the person is over 90 years old. Nobody would want that to happen to anyone, leave alone their parents. And it is absolutely shameful that you go there and watch a play, you refuse to identify yourself, and then you say it never happened. Then you say, oh, it's gone to the union territory zone. Your basic attempt of the bureaucrat is confuse the citizen. Tell him Haryana government can't do anything, send him to the UT zone. Let the citizen run between the UT, union territory on the one side and the state government on the other. Confuse the system, trouble the citizen as much as possible. Harass कर दीजिए, इतना harass कर दीजिए, इतना घुमा दीजिए कि वो थक जाए और कहे कि अगली बारी किसी की 90 साल की माता अगर रास्ते में गिर जाए फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे। कुचल दीजिए लोगों को, मगर ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं जवाहर यादव जी, आपको आज माफी मांगनी चाहिए जो ये हुआ, और ये जो भी अनिल कुमार है, मुझे पता नहीं इनका नाम क्या, उनको जाके एक्सेप्ट करना चाहिए उन्होंने जो किया। अजय कुमार इज सेइंग समथिंग टू अजय कुमार प्लीज, उनकी जानकारी अजय कुमार प्लीज, आप प्लीज धमकी देना बंद कीजिए। कानून की पत्रकारिता आप मत सिखाइए, पत्रकारिता कानून की जानकारी आप पत्रकारिता और न्याय मत सिखाइए। जवाहर जी थोड़ा सा शांत रहिए 2 मिनट। जवाहर जी, that you cannot give the first question is first question, आदत बिगड़ गई है जवाहर जी, first question, आदत बिगड़ गई है। Just a second, the first thing is, look at Mr. Jawahar Yadav's reaction here. It's like the Chief Minister of Haryana has been running down people. There's been 3 incidences. He's behaving like the government, the political class, and the first thing he should have done was apologize. Then he wants to confuse, saying that there's no case registered, and the first thing you have to do was take her to the hospital. But if you look at the history, whether it is right now, whether the Haryana government, and I don't want to, it is political, but Mr. Khattar has, in the past 1 year, there has been, his cavalcade has run down 3 people. In Chandigarh, in the Union Territory of Chandigarh, when the PM visited, they closed schools. And then when the Prime Minister said there will be an inquiry,
then it was followed again. So we request the Prime Minister that this culture, they close schools again in Varanasi, and that's why the bureaucrats are getting emboldened. And the most scary part is, I don't know whether Mr. Jawahar Yadav is a political appointee or a bureaucrat. I don't know. He's an OSD. This is, you know, this is OSD the most is the OSD to Chief Minister. He should have said, we made a mistake, we are sorry, it shouldn't have happened, we will take action against Mr. Anil Kumar. That's all. That's what was needed to be done. Instead of saying, Haryana mein case nahi hai. I have been a civil servant. This is the typical bureaucrat way of confusing everybody. Confuse कीजिए लोगों को, harass कीजिए, परेशान कीजिए लोगों को. Anil Kumar, and you started, and look at the evil. No, but look at the evil, saying there is no Home Secretary. Apologize till date. Kunti say, Jawahar ji, आप शुरू कर सकते थे कि अनिल कुमार वर्तमान में होम सेक्रेटरी नहीं है. But why do you say that there is no Home Secretary? Typical जो है जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है. आप तो शुरू कर सकते थे कि अनिल कुमार जी हैं, वर्तमान में ये सचिव पद है. अरे वर्तमान हो, भूतपूर्व हो, कोई भी हो, मानना चाहिए ना. अब आप अरे भाई साहब, लेकिन आप जिस तरह से शुरू किए थे जवाहर जी, बोलने का आपका जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का गाड़ी जो कुचल देता है, तो आप उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं. सुन लीजिएगा, आप पहले शुरू किए कि अनिल कुमार, आपको मालूम था कि अनिल कुमार एक सरकारी पदाधिकारी है. नहीं, वो सरकारी पदाधिकारी है कि नहीं, बात नहीं, वो देखिए, नहीं, अजय कुमार जवाहर यादव की जो अजय कुमार जी, you also been in government. The response of Jawahar Yadav is the typical government bureaucratic response. First get into a technicality. He is not present Home Secretary. He is former Home Secretary. There is not the my question is he a government official? Is there a government official? सुनना नहीं चाहते. No, you tell who's not listening to you. You're not being able to. You tell me one thing. Is it true or not that this person Anil Kumar has said? Who is Anil Kumar? अभी तक आपने केवल मुझे बोलने बंद करने के अलावा आपने मुझे 2 मिनट दिए इस पूरे डिबेट में. आपने बहुत ज्यादा समय मिला बोलने के लिए. आप कह नहीं पा रहे. आप माफी मांगिए आज. You apologize. You apologize. अपने सरकार you apologize tonight on program. आपने मुझे 2 मिनट दिए हैं क्या बोलने के लिए? आप apologize कीजिए प्रोग्राम पे. 40 मिनट की डिबेट में आपने मुझे 2 मिनट दिए हैं. आप बोल नहीं पा रहे. ये मेरी you continue, you complete your point please. You're taking a lot of time. You're not being able to make your point. माफी मांग लीजिए. ये आपका नहीं, मैं इसको तो सुनिएगा जी. मेरा कहना, मैंने अपनी डिबेट शुरू की थी कि किस बुजुर्ग महिला नहीं, अगर किसी को भी चोट पहुंचती है उसका दुख होना चाहिए. दुख के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा. आपको nobody wants your दुख. Nobody wants your दुख. We want action. Nobody wants your दुख. आपका दुख कोई नहीं चाह रहा है. आपके से एक्शन मांग रहे. मधुरेश, ये दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है हमको. लोग परेशान हो गए, हमें बहुत दुख है. ये दुख का मतलब क्या होता है? मधुरेश जी, अनिल कुमार जी के 80 पद के बारे में क्यों नहीं बताया जनता को? पूरी नहीं. What is his position? Okay, you tell me. No, you tell me. Jawahar Yadav, I won't spare you now. Jawahar Yadav. बात दुख की नहीं हो रही है. आपके ऑफिसर ने गलती की है, क्या आप मानेंगे या नहीं? अगर 2 मिनट भी लोग यहां पर चुप रहेंगे, अगर अर्नब गोस्वामी आपको 60 सेकंड 2 मिनट भी देते हैं, तो क्या आप माफी मांगेंगे या नहीं? यह सवाल है. आपने अभी तक एक बार भी माफी नहीं मांगी. आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपको इस बात का अफसोस है कि आपके एक ऑफिसर ने गलती की है. ये आपका एरोगेंस दिखाता है और कुछ नहीं. आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है. आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे क्या बोलने नहीं दिया, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यस प्लीज कैप्टन धनोआ, आप उतनी देर से बात दाएं बाएं घुमा रहे हैं. मुझे क्या बोलना है ये मैं डिसाइड करूंगा. कोई जनता के प्रति कोई सहानुभूति भी है? मुझे क्या बोलना है ये मैं डिसाइड करूंगा. चीफ मिनिस्टर खट्टर ने आज नहीं है, आपके कहने से जनता की सहानुभूति नहीं हो रही. जवाब भी ऐसे किया है. जाएंगे 3 दिन तक उन्हें मुझे क्या बोलना है ये मैं बताऊंगा ना. जवाब आपके अनुसार, अगर मुझे आपके अनुसार बोलना है तो मेरी नहीं, आपको क्या बोलना है? आप पहले यह तो मानेंगे आप क्या कह रहे हैं. यह बात भी आपको मानने से कोई इनकार है क्या? तो मुझे बोलने दीजिए. पक्ष सुनेंगे, हम सब सुनेंगे, लेकिन आप कहेंगे क्या? मैं सवाल पूछूंगा आपको, आप फिर बोलिए. जवाहर यादव, मधुरेश, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू जवाहर यादव. माय क्वेश्चन टू जवाहर यादव इज सवाल का जवाब दीजिए. आप मुझे बताइए, आपने कहा दैट यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, आपको इंसिडेंट के बारे में पता है. तो गाड़ी थी,
और गाड़ी के में एक एक्सीडेंट हुई। जिनका एक्सीडेंट हुआ उनका नाम हमें पता है, जिनको चोट लगी उनका नाम हमें पता है। वो आप बताइए कि वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी किसकी थी? नो 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 नो, आई मस्ट नो नो, गाड़ी किसकी थी? नहीं, आप बताइए मुझे, गाड़ी किसकी थी? आज सुनिएगा, अब आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डालना चाहते हैं? गाड़ी किसकी थी? गिव अ सिंपल आंसर। हुज कार वाज इट? अगर मैं गलत बोलूंगा तो पब्लिक देख रही है। हुज कार वाज इट? पब्लिक देख रही है। हुज कार वाज इट? अगर मैं गलत बोलूंगा पब्लिक डिसाइड करेगी, आप डिसाइड गोलमोल मत बोलिए। गाड़ी किसकी थी? हाँ, मेरा कहना यह है, मैंने अपनी बात यहां से शुरू की। गाड़ी किसकी थी? जवाब दे रहा हूं ना। गाड़ी किसकी थी? सवाल क्या है? मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं गाड़ी किसकी थी? हुज कार वाज इट? कम ऑन, आंसर माय क्वेश्चन। गाड़ी किसकी थी? जवाब मुझे देना है। गाड़ी किसकी थी? मुझे जवाब आपको सवाल का देना है, अपने स्पीच का नहीं देना है। गाड़ी किसकी थी? मैं बताऊंगा ना। गाड़ी किसकी थी? तो जवाब दीजिए ना। आप जवाब दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूँ गाड़ी किसकी थी? मिस्टर अर्नव, गाड़ी किसकी थी? मिस्टर अर्नव, ये तानाशाही गाड़ी किसकी थी? आपको ये तानाशाही रवैया बंद। गाड़ी किसकी थी आपको पूछ रहा हूं, आप तानाशाही का जब मुझे लेक्चर मत दीजिए। गाड़ी किसकी थी? उस कार वाज इट? अटेंडिंग प्राइवेट फंक्शन। छीन रहे हैं। गाड़ी किसकी थी? आप मेरी बोलने की आजादी छीन रहे हैं। तीन शब्द का सवाल। तैयारी पूरी नहीं है। गाड़ी किसकी थी? का पद नहीं पता। डोंट शाउट जवाहर, इट डजंट वर्क। ये सब स्ट्रेटजी चलती नहीं है। गाड़ी किसकी थी? करनी चाहिए थी। गाड़ी किसकी थी? मेरा रिक्वेस्ट ये है। गाड़ी किसकी थी? मेरी रिक्वेस्ट ये है। गाड़ी किसकी थी? डिबेट से पहले तैयारी करनी चाहिए। गाड़ी किसकी थी? आप तैयारी नहीं कर रहे। गाड़ी किसकी थी आप बताइए ना जवाहर यादव। जवाहर यादव, हुज कार वाज इट? स्टेशन निकाल रहे हैं। हुज कार वाज इट जवाहर? स्टेशन निकाल रहे हैं। जवाहर, हुज कार वाज इट? मुझे बोलने दीजिए। Yeah, मुझे सुनने दीजिए। मुझे बोलने दीजिएगा। मुझे बोलने दीजिएगा। मेरा कहना यह है, मैंने शुरुआत यहां से की कि 90 साल की महिला को चोट लगी, उसका गाड़ी किसकी थी? हुज कार वाज इट? मतलब यही होता है कि आप उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। 16 बार 17 बार पूछ रहा हूं गाड़ी किसकी थी? आप सुनिएगा, मेरा कहना है गाड़ी किसकी थी? अरे आप ये तानाशाही रवैया बंद करना है। आप उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, बट आपके अधिकारी ने गलती की। Madhuresh is not being able to answer a question. He is not being able to answer a question. Whose car was it? Captain Dhanwa, why is he not answering the question? Whose car was it? He is not even answering the question. आप कह रहे हैं आपको दुख Attending private function. Okay, let's ask Captain Dhanwa. The whole country is asking him, whose car was it? Captain Dhanwa, why is he not answering the question? Whose car was it? चाहिए थी। आज मिस्टर अर्नव आपकी तैयारी नहीं थी। गाड़ी किसकी थी? आपकी अर्नव तैयारी नहीं थी। Why is he? Tell me one thing, Captain Dhanwa. Why is he not answering the question? Whose car was it? Whose car was it? आपकी तैयारी Captain Dhanwa. Official Haryana car. Official government Haryana car being used for attending private function. आप जवाब दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। Was it an official car? Was it a government car? उस गाड़ी को Yes, it was official car. उस गाड़ी को एक ड्राइवर चला रहा था। नहीं, ड्राइवर गाड़ी किसकी थी? ड्राइवर किसको चला रहा था? एफआईआर हो गई। ड्राइवर किसको चला रहा था? गलती हुई है। ड्राइवर किसको चला रहा था? कार को चला रहा था। कौन किसको? सरकार की कार थी। गाड़ी में कौन बैठे थे? Haryana government car with a light on top. व्यक्ति को नहीं चलाएगा ड्राइवर। It was with a light on top. Was it a लाल बत्ती कार? Government car. अरे भाई जवाहर यादव चिल्लाइए मत, ये लाल बत्ती कार थी। Was it a red light car? Was it a लाल बत्ती कार? मिस्टर अर्नव, Was it a लाल बत्ती कार? नहीं थी। Was it a लाल बत्ती कार? को भटका रहे हैं। कैप्टन धनवा, was it a लाल बत्ती कार? नहीं चाहते। कैप्टन धनवा, calm down जवाहर, you're not answering my question. Lal Batti car, official Haryana government car being used for a private function. के अनुसार डिबेट करूंगा। No, was it a लाल बत्ती कार? मैं यस, हरियाणा गवर्नमेंट कार। Yes, it was a Lal Batti car. He's saying he's admitting it. One second, he's admitting it. 1 second. Go ahead, continue. ड्राइवर चला रहा था। हरियाणा गवर्नमेंट का ड्राइवर उसको चला रहा था। उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट का ड्राइवर चला रहा था उसके खिलाफ एफआईआर। फाइनली द एडमिशन, अजय कुमार फाइनली ही एडमिट्स। एफआईआर करेंगे ना? ओके, सो ही एडमिट्स। या उसके जवाहर जी, आप तो पहले बोल रहे थे कि हरियाणा गवर्नमेंट का मामला नहीं है, यूटी का केस के बारे में जानकारी नहीं है, बना पाते। No, he's got these. He's admitted. He's आपने admitted. तो पहले बोला था कि हरियाणा सरकार से मतलब नहीं है, यूटी का मतलब है। So viewers, viewers, I have a. आप पहले बोल रहे थे जवाहर जी, आपने भी हरियाणा सरकार का मामला है, यूटी में आपको कोई जानकारी नहीं। Okay, viewers, it is taken as. जवाहर जी, आपने फिर गलत सूचना क्यों दिया? एफआईआर यूटी में हुई है। आपने कहा था कि हरियाणा सरकार से मतलब है, ये यूटी में आते हमको कोई जानकारी नहीं है। अब आप बोल रहे कि एफआईआर हो गया है, आप बोल रहे कि एफआईआर हुई है। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह से अहंकार से आप बात कर रहे हैं, आपकी सरकार बात कर रही है,
नहीं, अहंकार से आप बात कर रहे हैं। आपको तैयारी के साथ बैठना चाहिए। अरे महाराज, हम तो भारतीय पुलिस सेवा में थे, तो हमको जानकारी मत दीजिए। हो रही है कि डिबेट में जो आप आपको हमको जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो अहंकार, जो आपकी सरकार की, अच्छा, ये जवाहर यादव, जवाहर आई एम आस्किंग टू रिलैक्स प्लीज, वन सेकंड। आपको जानकारी नहीं है मिस्टर। ओके जवाहर, रिलैक्स, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। यू नो जवाहर सुनिए, वो आपकी जो कहते हैं हिंदी में ना, हिंदी में सुनिए ना, सुनिए गवर्नमेंट इलाके में सुनिए, अजय कुमार हमको नहीं अजय कुमार बोलते कि एफआईआर हो गया है। अजय जी, आप पूरे टीवी चैनल में देश में सब लोग को जो है गुमराह कर रहे थे। देखिए अजय जी, वन सेकंड, यूटी में एफआईआर हुआ है। आप पहले बोल रहे थे कि हरियाणा सरकार यूटी में आती है, हमको कोई जानकारी नहीं है। फिर आप बोलते कि एफआईआर हुआ है। I want to say something to the viewers, Ajay. My point to the viewers is this. My point to the viewers is this, and I just want to speak to the viewers for a minute, please, if they are watching the news hour tonight. Okay, Jawahar, take a break for a while, please. By the way, Jawahar Yadav, the bigger question many viewers are asking you tonight is, you're going to with a Lal Batti car to go and see a play. Interesting, huh? The use of government vehicles. Anyway, you say, or as far as you know, Jawahar, I'll tell you one thing. वो हिंदी में जैसे कहते हैं ना, जो आपकी सुई अटक गई है, आप वही बात को रिपीट कर करके सबको बोर कर रहे हैं। आप बात सुनिए। Now there are all India service rules according to which a public servant has to display. Listen to me. You are a public servant, not a ruler. Please speak with some courtesy, please. I have shown you courtesy, but you are crossing the limit. And I request you, Mr. Jawahar Yadav, to please show some courtesies. This officer, if he is sitting in the car, has flouted the All India service rules, which clearly mention that a public servant has to display courtesy and good behavior with the public. If you are not aware of it, I would like you to read section 3(1) of the All India service rules. Maybe it will tell you how you are supposed to behave with normal people. Now, Ashish Shelar, I won't waste my time with you. Ashish Shelar. जानकारी नहीं है। You know, don't repeat yourself. Don't repeat yourself. You'll embarrass. हमें आप जाके सोचते हैं। You're not looking good today. Jawahar, I'm telling you, you're not doing the right thing. Now my question, I've given you full opportunity. Ashish Shelar, there was another incident in Mumbai. You're the Mumbai BJP chief. You may have seen, calm down, please be quiet for a minute. There is a video which has gone viral in which at least 4 women policemen. Will you be calm, please? A Lal Batti ka, viewers, please, viewers, I just want गाड़ी के ऊपर, this is लाल बत्ती थी कि नहीं गाड़ी के ऊपर? कौन था कि नहीं? दूसरी बात है, लाल बत्ती वाली गाड़ी थी कि नहीं? जानकारी के बैठे हो आप? I am only asking Captain Dhanwar to come in. Can you be quiet for a minute, Jawahar? आपको you only want to listen to yourself. Please be calm for a minute. I want Captain Dhanwar to say something. I've heard you. Listen to Captain Dhanwar, please. Yeah. आज आपकी तैयारी नहीं थी। Again, you are going on like a broken record. सुई अटक गई है आपकी। जानकारी नहीं आज इस केस की। Yes, Captain Dhanwar. Will you please be quiet, please? Otherwise, I'll please. Yeah, please. Thank you very much. Yes, it was an official car with a yellow light. It had a yellow light on it. It's an official car. Yeah, what he's going to tell you next is it had a yellow light, not a red light. So you're technically wrong that it was a red light car. The fact is, ladies and gentlemen, this picture speaks 1,000 words. I'm going to wrap up this part of the debate at this stage. And my point is this, there's a 90-year-old lady who's been knocked down by a Home Secretary's car. We'll take a couple of callers. We're opening up the lines right now. We've got no apology. We've seen the representative of the Haryana government, how he's speaking today. The message I take home from this is simple. The message is this. Lal Batti, Yellow Batti, VVIP car can come and knock down anyone at any point of time. There'll be no accountability. And if you as a citizen dare to complain, then you'll be made to go between bureaucrat to bureaucrat, police station to police station, and the whole system will stand up there to prove you wrong. Now, my basic question is, if there was an election next week or in a fortnight from now, would anyone dare to talk to an Aam Aadmi like this? No. But the elections have already happened. Maybe that is the reason they are arrogant. Now, Mr. Ramesh, I can tell you, if there was an election next week, you wouldn't be sitting on television talking like this. Because the netas would call you and say that Jawahar Yadav, please behave yourself. People won't like it. They won't vote for us. And that's the basic problem. Elections are over. You think you can behave like anything. That's not appropriate, Jawahar Yadav. There has to be sensitivity in our system among bureaucrats and politicians. Our first caller tonight. And okay, one second. One second. And now to the incident from Mumbai. Now to the incident from Mumbai. Now to the incident from Mumbai. You've confessed.
Now to the incident from Mumbai. Please, will you be quiet, please? I want pictures on the screen, if I may, please. Mr. Arnav, Jawahar, calm down. Jawahar, please, Jawahar, I'll tell you one thing. This is looking terrible. This is terrible, guys. This is terrible. And you see, just look at you. Look at how you are reeking with so much arrogance. चलिए बोलने दीजिए. उतनी देर से आप भी यही काम कर रहे हैं. आप घुमा रहे हैं लोगों को. आखिरी में आपने एक्सेप्ट किया है. Can I get a call up, please? आपसे अनुरोध है, थोड़ा शालीनता दिखाइए. शालीनता लोगों से आज. Okay. आज आप बेगर तैयारी के आगे. Okay, now Jawahar, he has nothing to say. He has nothing to say. He has nothing to say. Okay, fine. आपने सारी जानकारी. All right, now calm down. Okay, finished. Mr. Jawahar Yadav, you can't carry on like that. Ghanshyam is on the phone line. He's a viewer. Please, I'm putting everyone's audio down. Ghanshyam is an insurance advisor, and he is calling in from New Delhi. Ghanshyam, go ahead, please. Go ahead, Ghanshyam. And by the way, किसी और की तो सुनिए आज. Please, 1 minute. Listen to Ghanshyam. He's calling from Delhi. Go ahead, Ghanshyam ji. Go ahead. Yeah, good evening. Good evening, Ghanshyam. Really, first message that all these bureaucrats, they have made us like this. Recently, I met one of my retired uncle. He has fought free war 62, 65, and 71. What he told me that these bureaucrats have downgraded the defense forces, and what has happened today is an example of that. Because this captain is again a gazetted officer and so is the IS officer. An IS officer has to respect his senior bureaucrat. What's happening? Even Qattar's OSD is not saying anything, neither apologizing. No, he's not, Ghanshyam ji. He's not. You got a bad audio line go through with you, but you're right. He's not. He's not. He's pointing the finger and fighting back. Kulvinder is calling right now. हमने उसके लिए सॉरी फील किया है. नहीं, यू आर नॉट सॉरी फील करने से कुछ नहीं होता है. सॉरी फील करना कुछ नहीं होता है. वी वांट एक्शन. कैन यू पनिश द ऑफिसर? आई थिंक यू शुड. कैन यू पनिश द ऑफिसर? आई थिंक यू शुड. आई थिंक यू शुड पनिश द ऑफिसर. कुलविंदर इज कॉलिंग फ्रॉम चंडीगढ़. कुलविंदर इज कॉलिंग फ्रॉम चंडीगढ़. प्लीज, जवाहर यादव, दिस इज नॉट द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस. 1 minute. Kulvinder is calling from Chandigarh. Kulvinder, please go ahead. Kulvinder, if you can speak through, please. Or not here. Go ahead, Kulvinder. Go ahead, Kulvinder. Please calm down. Let hear Kulvinder, please. Go ahead, Kulvinder. Kulvinder, please calm down. Can I bring his audio down, please? For a minute, please. Listen to others. Jawahar ji, suniye, please. Kulvinder phone pe hai. Go ahead, Kulvinder. Yeah, my sympathy is with Captain Dhanoa, who has lost his brave mother. And somebody speaking. A viewer is calling. Jawahar Yadav. Please listen to someone else. Thank you. Kulvinder, go ahead. Kulvinder, go ahead. Kulvinder, go ahead. I just want to ask this OCD to CM Khattar that what action he will take against this Anil Kumar, former UT Home Secretary. As a Supreme Court ruling is there that whenever a accident victim, somebody knocked down him, he has not only a moral but a legal responsibility to take him to the hospital. It would have not taken anything more than a phone call. I think that's a good point. That's a good point you made out there, and I'd give the last word on this debate. 1 second. Before I go into the break, I want to go to the incident from Mumbai. Please, if I can have pictures of the incident from Mumbai on the screen, please. And my question is, thank you for waiting, Ashish Shelar. That incident from Mumbai, quick comment from you. You saw that young girl, 20-year-old girl, I think her name is Nandini Goswami, on the 25th of September, thrashed and beaten. Let's play the pictures full frame, please. Thrashed and beaten by 4 or 5 Mumbai police personnel. Her only fault was that she walked into what is a so-called VVIP entrance into a pandal. Would you like to apologize on behalf of your government for what happened to her? Ashish Shelar. To begin with, the act of the concerned policeman was unjustified, uncivilized and unjustified act. Needs to have probe into it, and my government has already initiated probe for the same, suspended the officer concerned, not only by verbal apology but by an action. My government has proved that women's respect needs to be maintained. So just one quick question, the same Mumbai police that goes all out to help Peter Mukherjee just a couple of weeks back in the Sheena murder case. Same Mumbai police. 2 commissioners changed. The alleged reason is their closeness to Peter Mukherjee and how nice they are being to Peter Mukherjee. First of all, I don't know what happened to that case. How is it? My broader question is, how is it that the same police that helps Peter Mukherjee thrashes a 20-year-old girl whose only fault is to go into a VVIP lane?
Why? Why is there this approach? Again, I must clarify that the allegation which you are leveling that somebody is trying from police department to help Peter Mukherjee, everyone knows as on about today, it is a baseless. Everyone knows about and it. no concrete you're a evidence cocktail at your circuit side as far to as show the police social And circuit second establishment time, is concerned. as Now, far my as question to you Mumbai is, Police's just because Act, this girl does not belong to your woman cocktail or a circuit, girl, is that the way you treat people? Is this the way you treat the Aam Janta? I will welcome Arnav Goswami, your inside story and investigation to prove that somebody from police department of Mumbai has helped Peter Mukherjee. The government will surely take the I'll give you the proof. Go and look at all the headlines on the sacking of, on the removal of Rakesh Maria and the taking away of the case to the CBI from the next Mumbai Police Commissioner. I don't know why you don't accept the obvious. Now, I'd like to compliment Captain Dhanwa, son of Paramjit Kaur. You didn't get an apology tonight for speaking up on the News Hour tonight. I compliment you for speaking up. It takes courage to go out there and speak up. Thank you. I can tell you, you haven't got an apology at all tonight. A lot of people are calling in to back you and to wish your mother all the very best, a speedy recovery. The government may not be there for her, but I think the people of this whole country stand up with her. You can tell her that, sir, and give her our regards. Will do, and thank you very much. And we are all going to fight for this. We've had enough of this. Mother, Captain Dhanwa. Mr. Dhanwa, wish you And our regards and Thank you very much, mother. I thank you all, ladies and gentlemen. We are tracking the case. Let's see if we get an apology for joining me on debate number 1 on the News Hour tonight.